मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी सेवन शरीफ से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। आज 18 अगस्त 2024 का दिन है और मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में बूंदाबारी हुई है, बारिश हुई है, कभी हल्की बारिश कभी तेज़ बारिश। चंद दिनों से मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी और पूरी सिंध के ऊपर आसमान पर बादलों के डेरे हैं, बादलों की आमदरफ्त है। लेकिन कल से सेवन शरीफ और उसके आसपास काफ़ी बारिश हुई है। आइए बारिश के मंज़र दिखाते हैं। ना सिर्फ सेवन शरीफ में बारिश हुई है लेकिन आसपास काफ़ी पहाड़ों पर भी बारिश बारी हुई है और बारिशों की वजह से बरसाती नहरें या बरसाती नदियां बहकर मंछर झील में पड़ गई हैं, जिससे मंछर झील के पानी में सतह में इजाफा हुआ है। इस साल पूरे पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में ज़्यादा बारिशें हुई हैं और सिंध में उसके बनिस्बत कम। लेकिन सिंध में अगर बात की जाए तो सिंध में सेवन के इलाके में बहुत कम बारिश हुई है। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ है कि अल्लाह की रहमत 2 दिनों से सेवन शरीफ पर बरस रही है। सेवन शरीफ मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी है, मुक़द्दस नगरी है। उसमें अल्लाह की रहमत के बादल छाए, बारिश हुई और वो मंज़र सेवन शरीफ की गलियों के, सेवन शरीफ के रोडों के और बाज़ारों के मंज़र आपको दिखाते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर से अक़ीदत रखने वाले हमारे पीर भाई जब सेवन शरीफ की कोई भी वीडियो आती है तो बड़े दिलचस्पी और बड़े चाह से देखते हैं। अल्लाह ताला सबके बेड़े पार फरमाए। तमाम अपने कलंदरी भाइयों के लिए दुआ करते हैं। सेवन ज़्यारता ग्रुप, सेवन टीवी ग्रुप देखने वाले हमारे पीर भाई सदा आबाद रहें, मुर्शद की नज़र करम हो, दुआ करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद क्या सूरत हाल है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो बने उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताता चलूँ। यहाँ पर मैंने जहाँ जो मकाम या जो जगह पर जिस जगह की वीडियो मैंने बनाई है, जिस जगह की वीडियो मैंने अपलोड की है, रिकॉर्ड की है, उसमें मैंने लिख भी दिया है कि ये फ़लाँ जगह है, फ़लाँ चौक है, फ़लाँ पार्क है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी।
हेलो हेलो
Awas ya, mau buka